Hello, hello everyone, and very good morning all, and welcome all to Odia 24/7 Odia YouTube channel. And this is Satya Pedagogy. समस्त पिला माने very good morning everyone. प्रणाम समस्त भल अच्छे पिला समस्ते भल अच्छ ठीक ठाक रेडी जय श्री राम समस्त गुड मॉर्निंग जय श्री राम जय जगन्नाथ व्हाट एवर मे बी यू आर कनेक्टेड. गुड मॉर्निंग एवरीवन. तो पे मैंने आम मैंने एसएसबी टीजीटी लर्निंग सेशन डिस्कसन करछे. लर्निंग और असेसमेंट भीतर गोटे कॉमन सेशन आपनकर अछि जोटा को कहउछि सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव्स. तो सेटा हम डिस्कसन करबा आज. तापर समस्त टिके सेशन को गोटे लाइक एंड शेयर कर देन बुला माने. यस बुला माने. तो हम आज डिस्कशन करिया सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिविस्ट सिचुएशन पर्सपेक्टिव्स. तो फर्स्ट हम डिस्कशन करिए सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग कौन, कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव कौन, सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग और कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव भितर सिमिलारिटी कौन बा कनेक्शन कौन. ठीक अच्छे. आउट कथा पिला माने आपण मानकर आमे आसंता काल ठरू आपनकर मॉक टेस्ट करिया पेडागोजी रो मॉक टेस्ट लाइक आमे 25 क्वेश्चंस पर डे डिस्कशन करबा. हम चेक करिया आपण मानक निजे निजे केते केते स्कोर रखछन विथ टाइमर से तमे डिस्कशन करिया. टाइमर दबा 30 सेकंड फॉर 1 मिनिट रो टाइमर अनुसार आपण क्वेश्चन आंसर देबे. ओके ठीक अछि. समझ के सेशन को गोटे लाइक एंड शेयर कर दियंतु पिला माने. देन हम स्टार्ट करिया कार्यक्रम. रेडी चलो. आज आप छोटिया थॉट दे challenges are what makes life interesting, but overcoming those challenges that what makes life meaningful. Challenges to life asio. If there is no challenges, life cannot be interesting. Challenges are what that makes life interesting, and overcoming those challenges becomes life meaningful and makes life meaningful. चैलेंजेस आसु चैलेंजेस को ओवरकम करिया दरकार आगु माडी चले दरकार देई हबो हेई पारे बट सक्सेस तो पाइबा. यस चलो. तो हमें लास्ट होमवर्क आंसर डिस्कशन करबा. ता सहित सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रो थ्योरी हम डिस्कशन करबा. थ्योरी सहित एमसीक्यू डिस्कशन करबा. लास्ट मध्ये होमवर्क अछि नोन आंसर दियंतु. ओके. गत क्लास मु आई थिंक सैटरडे फेजेस ऑफ टीचिंग पढ़ी. फेजेस ऑफ टीचिंग होमवर्क देती समस्ते टिके सेशन को लाइक एंड शेयर कर दियंतु. एवरीबॉडी शेयर गोटे शेयर कर दियंतु. यस एटा थिला आपण मनकर लास्ट होमवर्क. द कंटेंट एनालिसिस कम्स अंडर व्हिच फेज ऑफ टीचिंग. कंटेंट एनालिसिस को फेज ऑफ टीचिंग रे आसे. कंटेंट एनालिसिस माने एटा बिफोर टीचिंग हुए. टीचिंग रो आरंभ रु टीचर कंटेंट को एनालिसिस करे कौन पढ़ाइबो कौन नहीं. यस सेटा बिफोर टीचिंग जोड़ा होची एटा आपनकर प्री एक्टिव फेज हो. यस तो आंसर विल बी ऑप्शन ए. बहुत सारा पिला आंसर भी देइछंदी. आंसर आपनकर ऑप्शन ए हो आंसर. ओके ढेर सारा पिला आंसर देइछंदी. दीज आर द स्टूडेंट्स दीपक बेहरा, सत्यप्रिया विश्वाल, पल्लवी, प्रज्ञा श्री, शुभंकर, प्रभाती, शुभलक्ष्मी, मधु, एसके आजिम, प्रभाती अगेन, शुभंकर. रिपीट है. These are the students those who have answered. So आंसर देइछंदी. ओके समस्त पिला माने बहुत बहुत धन्यवाद जो माने भी आंसर देइछंदी.
ओके चल सो फर्स्ट हम डिस्कशन करिया सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग कौन देन सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग आउ कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग भितर कनेक्शन कौन ओके व्हाट इज सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग एंड हाउ दे आर connected with constructivist approach. The subject based learning revolves around particular subject matter or discipline such as mathematics, literature or biology. Subject based learning कले गोटे particular subject ऊपर focus करा जाए particular subject ऊपर focus करा जाए तो mathematics में पढ़ो केमिति mathematics रे कौन content अच्छी syllabus कौन अच्छी course of study कौन अच्छी literature biology yes subject based learning approach the emphasis is not on the rote learning but central objective is student mastery content knowledge okay इठी rote learning ऊपर गुरुत्व दिया जाए नहीं इठी गुरुत्व दिया यार subject based learning का central objective में मुख्य उद्देश्य होची जो पिला माने पाठ पढुछन्ती they should gain mastery over the content knowledge रे mastery gain करिवे कंटेंट नॉलेज रे मास्टरी गेन करिवे ना कंटेंट नॉलेज रे से डीप को जीवे डिटेल को जीवे दे विल गो डिटेल एंड डीप टू द कंटेंट नॉलेज बट दे विल बिकम ए सेल्फ लर्नर इन द कंटेंट नॉलेज रे से सेल्फ लर्नर हेबे बा दे विल इंटरनली मोटिवेटेड टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रति इंटरनली मोटिवेटेड हेबे तो से सब्जेक्ट रे डीप और डिटेल को जीवा ताको हमें कहूचे कंटेंट सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग पर्टिकुलरली सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट रे पिला पाठ पढुची सेही सब्जेक्ट रे जेमिति से मास्टरी गेन करिवो न घोषिबा पर न घोषि कि न दे सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग डज नॉट फोकस ऑन रोड मेमोराइजेशन और क्रैमिंग इट फोकसेस अपॉन द मास्टरी ऑफ द कंटेंट नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट बाय द लर्नर ओके So this type of learning tends to focus on the subject rather than the student. Subject पर बेसी focus करे student अपेक्षा ये पचारे subject based learning focused on which aspect? Subject based learning focuses on which aspect? Subject based learning focuses on subject rather than the student. बेसी subject पर गुरुत्व दिए. Mastery learning माने तो go deep to that particular subject. ये subject बाबत रे detail को जीवा detail ज्ञान ग्रहण करिवा mastery knowledge learning will coach. So in a subject based approach to learning, each content area contains its own set of skills and concept for mastering that content. The content रे mastery gain करिया पे प्रतिटी content area रो okay skill और concept different है that geography रो skill and concept physical education class होनी geography रो skill and concept is different from science रो skill science रे में जो skill apply करछे सेटा language रे apply करने language रे में जो skill apply करछे सेटा में biology रे apply करने biology तो science रे जाउछ math रे apply करने तो different subject has separate skill and separate concept separate skill and separate concepts sir physical education class होनी मना कलिबा होनी होनी so different subject has different skill different subject has a different skill okay that's why that is subject based learning approach चलो for example in science students learn about scientific method science related vocabulary to words in science रे हमें यूज करछे gravitation motion circular motion density these are the particular term please what a skill question code subject रखो ना this knowledge is then used when students conduct experiment and investigations तो science रे हमें experiment करू investigation करू scientific method रे पाठ पढ़ाऊ
साइंस रिलेटेड वोकाबुलरी जोड़ा जार्गन बोली कहुए जार्गन कहले पर्टिकुलर गोटे गोटे सब्जेक्ट किछि किछि वर्ड अच्छे से सब्जेक्ट यूज करा जाए जमी ल आम यूज कर एलएलबी कथा कहवा एलएलबी रे आम कहले बेल एंटीसिपेटरी बेल इंटरवेनिंग बेल ये जो टर्म गुड़ा केवल ल रे यूज करा जाए हाँ हिस्ट्री में कहले टू ड्रॉ द टाइमलाइन ऑफ गुप्त डायनेस्टी टाइमलाइन ड्रॉ करो पे टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे टू ड्रॉ द टाइमलाइन ऑफ गुप्त डायनेस्टी टाइमलाइन ड्रॉ कर यहाँ हो पारे हिस्ट्री गोटे गुप्त हो कि जो कौन डायनेस्टी गोटे टाइमलाइन ड्रॉ कर बेसिकली है तो साइंस कथा कहले मैथ कथा कहले सेपरेट सब्जेक्ट हैज सेपरेट मेडिकल मनकर ऑपरेशन सर्जरी anesthesia these are the terms which are particularly used in medical field सेंत किछि किछि field किछि किछि सब्जेक्ट थाए बेल 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 जानना बेल आ कौन बेल तुम जानिछ सुनिछ बहुत सारा फिल्म आ सीरियल देखतो सीरियल जगह जे बेल बोल these are the term that is जोड़ा यूज करा जाए केवल कोठे रे लॉ रे सेंत मेडिकल किछि टर्म अछि केवल मेडिकल यूज करा जाए साइंस किसी टर्म साइंस यूज करा जाए मैथ किसी टर्म अच्छे मैथ यूज करा जाए पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे गोटे गोटे जो टर्म यूज करा जाए ताको कहे जार्गन जाग्रुन तो सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इज ए कंजर्वेटिव एंड मोस्ट ऑब्वियस वे टू ऑर्गेनाइज करिकुलम थ्रू ए सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच तो सब्जेक्ट बेस्ड करिकुलम रे हमें कहा पर गुरुत्व दो सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच ऊपर हाँ स्टूडेंट्स एक्टिव थाए ना पैसिव एक्टिव रही पारे स्टूडेंट पैसिव कहीं हो एक्टिव न रही स्टूडेंट मास्टरी गेन करियो केमती ओके हाँ तापर आसला कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ऑलरेडी हमें कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच गोटे क्लास डिस्कशन करछे सेतिर पेज बायोग्राफी कांसेप्ट मध्ये डिस्कशन करछे तो कंस्ट्रक्टिविज्म बिलीव्स दैट लर्निंग occurs as learners are actively involved in the learning process they are making the meaning and knowledge construction by connecting the present knowledge with the existing knowledge को previous knowledge सहित connection करी they construct their own knowledge एटा हमें कंस्ट्रक्टिविज्म में बेसिक गुरुत्व देउछे लर्नर रो रियल लाइफ एक्सपीरियंस इति बेसिक गुरुत्व देउछे लर्नर रो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऊपर लर्नर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऊपर बेसिक गुरुत्व देउछे ओके कोच हमें कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव तो सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव पहले हमें कौन बुझा आम यहाँ टॉपिक हमें फास्ट डिस्कशन कले सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग कौन तापर देखले कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव कौन एंड व्हाट इज सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव ओके हाँ ऑनलाइन ऑल डेवलपमेंट वेरी गुड बहुत बढ़िया तो ह्यूमंस आर मीनिंग मेकर इन देयर लाइव्स एंड एसेंशियली कंस्ट्रक्ट देयर ओन रियलिटीज ह्यूमंस और स्टूडेंट्स आर मीनिंग मेकर दे आर द मीनिंग मेकर ऑफ देयर ओन लाइव्स एंड दे एसेंशियली कंस्ट्रक्ट देयर ओन रियलिटीज पिला माने निजे निजे नॉलेज निजे कंस्ट्रक्शन करंती आम कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग पर्सपेक्टिव रे आमे को बळे एनवायरनमेंट क्रिएट करबा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट सर डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट कोन जोठी आज ए टीचर यू शुड बी फ्लेक्सिबल टीचर हिसाब रे आपण फ्लेक्सिबल हेबे फ्लेक्सिबल कोथरे फ्लेक्सिबल इन टीचिंग मेथड हो टीचिंग मेथड रहू फ्लेक्सिबल इन एग्जांपल्स हो पिलर कास्ट क्रीड रिलीजन को नै कि आपण पक्षपात हेबे नाही से मान प्रति सेंसिटिव हेबे you should be sensitive towards them okay democratic environment create करा जीवो जोठी टीचर पिला मानकर ओपिनियन को गुरुत्व दबो स्टूडेंट्स विल the teacher will respect the opinion of the learner teacher will involve the learner in learning process रे involve करिवो students are decision maker पिला माने decision maker हेबे they will take responsibility of their own learning से माने निज लर्निंग को निज लर्निंग रो निज रेस्पोंसिबिलिटी नेबे ओके
तो लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस, लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व। कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रे आमे बेसी गुरुत्व तो लर्नर माने लर्निंग टा होची गोटे एक्टिव प्रक्रिया और लर्नर्स माने एक्टिव इन्वॉल्व। लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअलाइज एंड सिचुएशनल, लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअल एंड सोशल। सर कॉन्टेक्चुअल कहले जोटे हम कहबे लर्निंग अकॉर्डिंग टू रियल लाइफ सिचुएशन। पाठ जेतला हम पढौछे पिलार रियल लाइफ सिचुएशन को अप्लाई करी जेतला हम पाठ पढौछे ताको हम लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअल बोली कहउछे। फॉर एग्जांपल तुम माने पढ़ाऊच पिला को अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ाऊच कि पर कैपिटा इकोनॉमिक्स रे पर कैपिटा इनकम पढ़ाऊच कॉन्टेक्स्ट देल सिचुएशन देल तुम कॉलोनी रे जितेटा घर अच्छी समस्त घर को बुलिया जा बुलिकी जा घर सब डाटा कलेक्शन करके आणबू घरे केते लोक संख्या केते घरे किए केते टका इनकम करछुंती पिला गला संध्या समझे घर बुलला चा बिस्कुट भी खाइला और डाटा कलेक्शन करके आइला दे रियल लाइफ रे से बुझुची एक्चुअली पर कैपिटा इनकम बा मुंड पिछा एटा कोन। लर्निंग अकॉर्डिंग टू व्हेन लर्निंग इज कनेक्टेड टू द रियल लाइफ सिचुएशन दैट इज कॉल्ड एज लर्निंग इज कॉन्टेक्चुअल। लर्निंग सोशल तो आम जानते बहुत सारा लर्निंग टा सोशल एक्टिविटी जो रियल लाइफ कनेक्शन हुए आम तो कहीपर लर्निंग रे ग्रुप एक्टिविटीज आम करूँ स्टूडेंट्स लर्न बाय लर्निंग इज सोशल कथा आम ऑलरेडी डिस्कशन करछे बाइगर्सिंग अप्रोच रे। हाँ बाइगर्सिंग अप्रोच डिस्कशन करछे लर्निंग रे इंटरेक्शन हुए इंटरेक्शन विथ एडल्ट इंटरेक्शन विथ पीयर्स इंटरेक्शन विथ कम्युनिटी मेंबर्स इंटरेक्शन विथ फैमिली मेंबर्स से मानोट पिला बहुत सारा कथा सीखे। इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव वी हैव टू क्रिएट ए फ्री एनवायरनमेंट जोटा फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट जोटी पिला मानन को अपॉर्चुनिटी दिया जीवो दे कैन पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिविटीज दे कैन फ्रीली एक्सप्रेस देयर ओपिनियन they can participate in discussion, they can participate in debate, they can participate in experiment, they can participate in project सबुतरे से मानकर फ्री पार्टिसिपेशन रहइबो। फ्री एनवायरनमेंट कहले जोटी पिला को डिस्क्रिमिनेट करा जीव नाही ता एबिलिटी बेसिस रे ए भलो खराब गध एमदी डिस्क्रिमिनेट करा जीव नाही लेवलिंग तो करा जीव नाही। यू कैन नॉट लेबल द स्टूडेंट एज गिफ्टेड लर्नर्स बैकवर्ड लर्नर्स स्लो लर्नर्स। लेबलिंग द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ IQ is a negative word in pedagogy. When you are labeling the students on the basis of their IQ that ability grouping बोली कहा जाए जे नेगेटिव वर्ड इन pedagogy ताको नेगेटिव वर्ड कहा जाय परियो। जनरल क्लासरूम तुम एबिलिटी ग्रुपिंग बनाई परिबो नाही। हां रिमेडियल क्लास रे तुम एबिलिटी ग्रुपिंग करि परिबो रिमेडियल क्लास रे तुम एबिलिटी ग्रुपिंग करि परिबो। रिमेडियल क्लास रे एक्स्ट्रा क्लास जो नोच पिला मानको गिफ्टेड पिला मानको अलग क्लास करि परिबो स्लो लर्नर पे अलग क्लास करि परिबो बट इन जनरल क्लासरूम यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द एबिलिटी ग्रुपिंग ए भलो छुआ एठी बस एवरेज छुआ एठी बस गधिया छुआ तळे गड़ एमदी करि परिबो कि भलो छुआ एठी बस एवरेज छुआ एठी बस गधिया तळे गड़ यू कैन नॉट डू एबिलिटी ग्रुपिंग इन जनरल क्लासरूम। एबिलिटी ग्रुपिंग कैन बी मेड इन रिमेडियल क्लास। पिलार कास्ट रिलीजन बेसिस रे तमे केबे ताको डिस्क्रिमिनेट करि परिबो नाही। जदी गोटे क्लास रे सबु जक रिलीजन र पिला अछंती सब रिलीजन रे एग्जांपल दियो सब लैंग्वेज र पिला जेतळ अछंती क्लासरूम में मल्टीलिंगुअल अप्रोच को गुरुत्व दिया जाऊ यस हवा दरकार। तो टीचर आज ए फैसिलिटेटर और गाइड टीचर कौन फैसिलिटेटर गाइड तेन जित कह जो व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव्स टीचर इज ए फैसिलिटेटर सर फैसिलिटेटर और गाइड माने कौन टीचर जदी क्वेश्चन पचारिबो पिला कहिबे टीचर जदी प्रोजेक्ट दबो पिला करिवे टीचर जदी ग्रुप बनेबो पिला ग्रुप रे इन्वॉल्व हेबे टीचर जदी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करिवो पिला एक्सपेरिमेंट करिवे टीचर जदी एक्सपेरिमेंट रो डेमोन्स्ट्रेशन दबो पिला माने एक्सपेरिमेंट करिवे सो टेस्टी डेमोन्स्ट्रेशन दबा क्वेश्चन पचारिबा ग्रुप तैयारी करिबा ग्रुप फॉर्मेशन बेले मैं बुली बुली देखुची सबु पिला माने पार्टिसिपेट करूछन ना नाही समस्ते आंसर दउछन ना नाही समस्त के इन्वॉल्वमेंट रहउछ ना नाही यार होन यार बाबू तू किछ कहनु एनकरेज करिबा रिइंफोर्स करिबा मोटिवेट करिबा ए तो फैसिलिटेटर काम ना एम न जे ग्रुप बनेउ दे दे तुम माने ग्रुप करो ग्रुप रे तुम माने डिस्कशन करो ओइठी बसी की रील्स बनेबी दुल्हन बनामी सेमते नाही फैसिलिटेटर माने बुली बुली तो क्वेश्चन पचारे पिला कहिबे प्रोजेक्ट देले पिला करिवे ग्रुप फॉर्मेशन कले पिला पार्टिसिपेट करिवे ओके। डिजिटल प्लेटफॉर्म भलो पिला जानी टीचर जानी पन गदिया के गिफ्टेड के अच्छा। तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट आल्सो नीडेड सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट नीडेड दैट्स व्हाई हमरो SSB TGT रे CBZ अलग अछि PCM अलग अछि आर्ट्स अलग हिंदी अलग संस्कृत अलग पीटी अलग
दे आर सब्जेक्ट स्पेसिफिक एक्सपर्ट दैट नीडेड देन जी जो सब्जेक्ट रे एक्सपर्ट से सब्जेक्ट तार डेप्थ नॉलेज रहिया दरकार कॉन्टेक्चुअलाइज्ड एंड मल्टीपल रिसोर्सेस बहुत सारा रिसोर्सेस दरकार बट कॉन्टेक्चुअलाइज तो ऑलरेडी डिस्कशन कले जो कॉन्टेक्चुअलाइज कले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मल्टीपल रिसोर्सेस कैन आल्सो बी प्रोवाइडेड व्हाइल यू आर टीचिंग इन द क्लासरूम variety resource दरकार okay and formative assessment techniques should be followed formative assessment techniques should be followed formative assessment technique कहले जोटी हमें टीचिंग लर्निंग रे इंप्रूवमेंट ऊपर गुरुत्व दो because formative assessment कहले the type of assessment which is integrated interconnected interwoven and interrelated with the learning process the type of assessment which going on according with the learning process सहित जोड़ा चालू छी ओके कौन सब हसछन मूवी हसी जो टीचर जानती अगेन नेम चेंज करके आसिया भयंकर छुआ तो हम बुझिले पिला माने सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इन कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रा मीनिंग बुझिले एवरीबॉडी बुझी पाइले कि ना नहीं सेशन को लाइक कर दे पिला माने जो अच्छा जदी बुझी परछ लाइक करो बुझी पाइले चलो जेटर फाइनल रिजल्ट केबे आसीबो कहि परिबी प्लीज मु कहि परिबी जे जज कहि परिबो तो कोच पिला माने आसन काल ठर आपनकर मॉक टेस्ट करिया जेतु एसएसबी टीचर आपनकर दीटा पार्ट अछि लर्निंग एंड असेसमेंट दीटा जाक पार्ट रो क्वेश्चन दबा लर्निंग रो भी असेसमेंट पीछे पूरा होल सिलेबस अनुसार एक्सपेक्टेड मॉक टेस्ट तो आम चेष्टा करिया टीजीटी एग्जाम जेबे होछो ता पूर्व जो अति कम जेंदी 30-40 टा मॉक टेस्ट हम पाकर थिबो ओके चल क्वेश्चन कच कर दबा देखो which of the following best describes subject based learning in a constructivist perspective so TGT exam expected a month last expected not confirm SSB TGT exam रो इलेक्शन रो कोड ऑफ कंडक्ट से तो कि संपर्क नहीं परीक्षा आ जो पोस्टिंग दिया होनी परीक्षा आ जाय पारे रिजल्ट बाहर जाय पारे पोस्टिंग दिया जीवनी इलेक्शन भीतर पर दिया ऑनगोइंग प्रोसेस जोड़ा परीक्षा सहित कोड ऑफ कंडक्टर किसी भी संपर्क नहीं परीक्षा सहित कोड ऑफ कंडक्टर किसी भी संपर्क नहीं पोस्टिंग दिया जीवनी पोस्टिंग दिया है गवर्नमेंट रो सेटा गोटे ताकू जेटी जेंदी बाहर जेटर तो बाहर जो स्कूल अलॉटमेंट हो जो सब हो ओरिएंटेशन प्रोग्राम होबनी चलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव memorization of facts and information passive absorption of knowledge active construction of understanding through interaction and experience rote learning of a predetermined concept eta koi bi सहज रे सर active construction of a understanding through interaction and experience आज मु मॉक टेस्ट जो आपन गत काली गत जो होमवर्क देथिली तार आंसर जो मान करथिले समस्त नाम आज मेंशन करछि ओके
In constructivist subject-based learning, the role of the teacher is primarily to dash, provide all necessary information, directly instruct students on what to learn, facilitate and guide students' exploration and discovery, assess students' knowledge through standardized tests. Constructivist-based learning teacher or primary role कौन? Teacher or primary role provide all necessary information दिए ठीक अच्छी. Directly instruct students on what to learn, facilitate and guide students' exploration and discovery, assess students' knowledge through standardized test. कौन है आंसर? जो facilitate and guide the students' exploration and discovery. हाँ, very good. Which of the following is a key principle of constructivist subject-based learning? Constructivist subject-based learning रो कोड़ा कोटे key principle अटे. Competition among students foster better learning outcomes. The focus is on individual meaning making, and sense of understanding. Passive listening to lectures enhance comprehension. Repetition of information leads to deep understanding. That is a competition among the students. Competition टा नेगेटिव वर्ड इन पढ़ा होची. Competition टा पिला मन भितर ओवर जेलसी क्रिएट करे. हमें competition बदल बेसी को वर्ड पर गुरुत्व दउचे. Collaboration, cooperation, participation आप रे अधिक गुरुत्व दउचे. ओके, इंडिविजुअल मीनिंग मेकिंग, हाँ मीनिंग मेकिंग पर तो गुरुत्व दिया जाए निहती भाव में. सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर गुरुत्व दिया जाए. तो बीटा भल आंसर आप हम. पैसिव लिसनिंग नेगेटिव वर्ड. पैसिव लिसनिंग टू लेक्चर्स एनहांसेस कंप्रेhension. नो, पैसिव लिसनिंग आम कौन कहते. पैसिव लिसनिंग नेगेटिव वर्ड. रिपीटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू डीप अंडरस्टैंडिंग. मोर रिपीटेशन मोर प्रैक्टिस लीड्स टू मेमोराइजेशन. अधिक रिपीटेशन अधिक प्रैक्टिस अर्थ तो मेमोराइज कर जिन नेगेटिव वर्ड. आंसर हो बी. अंडू क्लास कर नेगेटिव वर्ड पॉजिटिव वर्ड रो पीडीएफ आउथर शेयर करियो प्लीज. हाँ शेयर कर दो टेलीग्राम. In a constructivist classroom, learning activities are often designed to dash, emphasize rote memorization, encourage collaboration and discussion, limit student autonomy, focus on teacher-centered instruction. कदापि तो rote memorization तो negative word हबनी कदापि. You cannot limit the student. You have to promote the student autonomy. पिलार autonomy को अपना promote करिए. टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन में नेगेटिव काट दे. चल आंसर गला बी. According to constructivist theory, learning is most effective when it is dash. Constructive theory अनुसार learning is most effective when it is dash. Isolated from real world context. Learning को जतले आमे real world context रू isolate करिबा सर isolation पर नेगेटिव वर्ड अलग करि परिबेनी. You cannot isolate, you cannot segregate learning from real life context. Negative based on solely on textbook. Solely माने only. केवल टेक्स्ट बुक और लेक्चर नेगेटिव वर्ड. Always try to go beyond the textbook. आमे कहू always try to go beyond the textbook. Connected to students prior knowledge and experience. हाँ पिलार प्रायर नॉलेज और एक्सपीरियंस को पाठ पढ़ारे कनेक्ट करबा एटा भलो ऑप्शन. सी इज ए बेटर ऑप्शन. रिजिडली स्ट्रक्चर्ड नेगेटिव वर्ड. सहज क्वेश्चन नहीं तुम पे आज ना हो सहज हवा दरकार. एटा तो तुरा चिंता तो सहज पड़िबा ना. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज असेसमेंट इन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव. कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम में असेसमेंट माने कौन हो पारे. स्ट्रिक्टली स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, मल्टीपल चॉइस एग्जाम, ऑथेंटिक टास्क एंड परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट. शॉर्ट आंसर क्विज.
कौन अब आंसर वेरी गुड शुभस्मिता सिल्ली अरविंद रोहन पल्बी आरपी स्माइल अरूप मनीष मोनालिसा महापात्र तमसु पल्लवी दिनाक्षी निकिता बहुत बढ़िया रमेश प्रियंका वही नायक गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड स्ट्रिक्टली तार नेगेटिव वर्ड एग्जाम्स मल्टीपल चॉइस ठीक अच्छे बट एग्जाम सब नुहे लिखाई जो ऑथेंटिक टास्क ऑथेंटिक अर्थ रियल लाइफ टास्क देन रियल लाइफ टास्क दबा परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट दबा परफॉर्मेंस असेसमेंट में जो स्किल बेस्ड असेसमेंट जो पिलार स्किल प्रमोट हम ये बढ़िया कथा सी इज बेटर देन अदर आंसर हम कौन सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 constructivist subject based learning often emphasizes the importance of passive reception of information following a predetermined curriculum, inquiry based exploration and discovery, memorization of facts and figures. Constructivist subject based learning often emphasizes the importance of कहाँ पर गुरुत्व दौर passive repetition of information following a predetermined curriculum, inquiry based exploration and discovery, memorization of fact. Passive तो नेगेटिव कितना होबनी memorization नेगेटिव होबनी आमे predetermined curriculum पर गुरुत्व दौने constructivist approach रे आमे सबले गुरुत्व दौचे flexible curriculum ऊपर we are always focusing on flexible curriculum students रो inquiry based exploration and discovery जोड़ा कोई परिबा आमे inquiry पर गुरुत्व दौचे इन्वेस्टिगेशन ऊपर गुरुत्व दौचे ओके डन नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इज कॉमनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिव सब्जेक्ट बेस्ड लर्निंग कोटा अप्लाई करा जाए एथरे लेक्चर बेस्ड टीचिंग डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग ड्रिल एंड प्रैक्टिस Which of the following instructional strategy is commonly used in constructive subject based learning रे आ विदुर को instructional strategy को अप्लाई करा जाए वेरी गुड आरपी स्माइल अनु आरोही अरविंद स्वातिश्री प्रकाश देवस्मिता रमेश मोनालिसा वेरी गुड पिला लेक्चर बेस्ड टीचिंग तो नुहे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नुहे एंड कहले प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग बा को पीबीएल बेली कहा जाए पीबीएल प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग हो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग हो CHSL हो कि पीबीएल हो दीटा का अप्लाई करा जाए ड्रिल एंड प्रैक्टिस मे बी लीड्स टू मेमोराइजेशन तो भला आंसर हो ऑप्शन बी तेरा को प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी कहि परिबा में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच अप्लाई करि परिबा कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव रे डिस्कवरी मेथड अप्लाई करि परिबा लैबोरेटरी मेथड अप्लाई करि परिबा इंडक्टिव मेथड अप्लाई करि परिबा यस इंक्वायरी अप्रोच अप्लाई करि परिबा एथरे डिस्कशन करि परिबा डिबेट करि परिबा क्वेश्चन आंसर मेथड अप्लाई करि परिबा मिटी डायलॉग भी तो करि परिबा डायलॉग वा कन्वर्सेशन मेथड डायलॉग मेथड फाउंडर के प्लाटो क्वेश्चन आंसर सोक्रेटिस नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग जॉन डीवे डिस्कवरी ब्रूनर इनोक्टिव बैकन फ्रांसिस बैकन डन यस जे जन असो समते गोटे लाइक कर पे सेशन को गोटे लाइक कर दी पे अकॉर्डिंग टू constructivism accordingly knowledge is dash fixed and unchanging
constructed by learner through interaction with the environment, best transmitted through passive means, only accessible through memorization. According to constructivism, knowledge is dash. Constructivism अनुसार knowledge is fixed and unchanging. No, knowledge is flexible. बामे कहले knowledge is flexible, knowledge is dynamic. Constructivism अनुसार knowledge टा dynamic सबले. According to constructivism, knowledge is dynamic. It is constructed by the learner through interaction with environment. हाँ, भला कथा. Transmission नहीं. Construction को transmission टा हुए teacher centric approach. Transmission टा हुए teacher centric approach. Only accessible through memorization. Na. Answer over B, over better answer. B will be the best answer. B. The primary goal of constructivist subject-based learning is to dash. Transmit information from teachers to students, foster critical thinking and problem-solving skill, ensure uniformity in knowledge among the students, promote memorization of key facts. The primary goal of constructivist subject-based learning is to dash. कौन आंसर कौन तो देखा वाला ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन तो टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे हुए टीचर सेंट्रिक अप्रोच रे ओनली टीचर आसिला गाई देला पळेला अनै था बोले तो भोकाळा नै था स्टूडेंट्स आर पैसिव ये क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करा जाय कंस्ट्रक्टिव अप्रोच रे यस क्रिटिकल थिंकिंग माने कोन गोटे जिंस को डिफरेंट एंगल चिंता करबा ओके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अप्रोच ऊपर गुरुत्व दिया जाए एंश्योर यूनिफॉर्मिटी ऑफ नॉलेज ना यूनिफॉर्मिटी नो एंश्योर डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज अमंग स्टूडेंट्स बिकॉज पिला मन इंडिविजुअल डिफरेंस थाए समस्त यूनिफॉर्म नॉलेज कंस्ट्रक्शन करिवे सेंति किछ मान नथा देयर इज इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग द लर्नर्स स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्रमोट मेमोराइजेशन हम तो मना कले मेमोराइजेशन ना नेगेटिव वर्ड रोड मेमोराइजेशन हो क्रामिंग हो मगप हो ये सब जिनसर अर्थ हो घोषिबा ये सब जिनसर अर्थ हो कोन घोषिबा एंड ऑल दीज आर नेगेटिव वर्ड इन पेडागोजी ओके तो सो आंसर ता लबो तारे बी इज द राइट आंसर डन इटा स्क्रीनशॉट नहीं जाओ एटा तुम होमवर्क है होमवर्क रहा होमवर्क आंसर दब कमेंट बॉक्स दब जो मैंने भी ठीक आंसर देते समस्त ना डिस्प्ले शो करवा आज शो करी पुणी आउ थे मुझे रिपीट कर आसंता काल आपंकर मक टेस्ट करवा मक टेस्ट टाइमर सहित करवा टाइमर लगे टाइम आंसर दबा आंसर दबा चेक करा केतरा ठीक अच्छे भूल अच्छे तो सेशन जब भल लगे पे समस्त गोटे लाइक करदे पे एवरीबॉडी गोटे लाइक तो कर दियो सेशन भल लगे थ्योरी बुझीपारे क्वेश्चन किसी इजी था किसी इजी क्वेश्चन प्राय सब जगह इजी क्वेश्चन था यस कहते OSSSC अप्लाई तो चली तार चली RI अमीन SFS RI SFS अंगनवाड़ी सुपरवाइजर आपण मानकर बुक आटा स्टोर अवेलेबल अच्छी 384 टका पड़ो Y594S कोड दे अप्लाई कले 368 पड़े आई थिंक नहीं पारे ओके ता सहित RI अमीन अंगनवाड़ी सुपरवाइजर बैच मत चली आड़े कैन जॉइन द बैच जो मैंने मैथ बहुत स्ट्रांग ना जो मैथ लुज मैन सर मैथ बैच यू कैन टेक दिस बैच बाय अप्लाइंग माय कोड Y594 ऑफलाइन रे टेस्ट सीरीज प्रिलिम टेस्ट सीरीज प्रिंटेड वर्सन टेस्ट सीरीज पूरा घर जीव घर बस टेस्ट सीरीज दब OMR भी जीव ओके चलो SSB TGT बैच मतलब चली फेब्रुआरी कैन जॉइन द बैच तो लास्टली मो छोटिया थर दे दे The day you take complete responsibility for yourself, the day you stop making any excuses, that the day you start to the top. Excuses दवा बंद करंतु पाठ पढ़ंतु बस आउ किछ नहीं निज रेस्पॉन्सिबिलिटी नियंतु जे मोर जदी खराब हो ताबे मु दाई हां तो थैंक यू सो मच पिला माने
जो मैंने सेशन में नुआ अच्छे समझे गोटे लाइक शेयर करेंगे और चैनल को जो मैंने नुआ अच्छे सब्सक्राइब बड़े करेंगे। थैंक यू, जय जगन्नाथ, नमस्कार। देखा पे मॉक टेस्ट सहित आसंता काली। टिल देन टाटा, टेक केयर।